आप अगर सपोज इस बार अगर सिर्फ डेटा पे है तो देखिए कटेगा हाँ कि नहीं। फिर एक दो बार तो मैं स्टार्ट ही डाटा पे किया तो कुछ दिक्कत फिर नहीं आई मुझे। फिर फिर दिक्कत नहीं नहीं आई। आती ना। ना। ओके। और कभी मेरा वाईफाई बंद ही नहीं होता भैया, दो दो ऊपर नीचे कनेक्शन वाईफाई लगे, कभी ध्यान में नहीं होती दिक्कत, कुछ नहीं होती। लेकिन सुबीटिंग ठीक में है, ही कोई होता है टेंशन बस। नहीं ना, तो डेटा में अगर हो नहीं रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। हाँ। मैं सेट कर रहा हूँ कर रहा सेशन। हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सबको। आपके कोई क्वेश्चंस है या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप अनम्यूट करके करिए जरूर। प्लीज इन केस यू हैव एन एक्सपीरियंस टू शेयर और यू हैव क्वेश्चंस टू आस्क, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। दीदी सुनीता चौधरी दीदी, हम निर्विघ्नता से मेरा शुभिट सेशन होने दीजिए, श्री माता जी प्रार्थना करेंगे तो शायद वाईफाई प्रॉब्लम नहीं देगा। मुझे भी कभी कभी मेरे मेडिटेशन सेशन में चला जाता है, 1 सेकंड के लिए जाता है। फिर मैं हाँ जी प्रार्थना दीदी, जय करके श्री बैठी हूँ माता तो जी, नहीं यही मैं होता है। सोच रही थी। हाँ सुबीटिंग हम्म। में लगता है मुझे अड़चन होती है। हाँ तो फिर मैं प्रार्थना करती हूँ, श्री माता जी निर्विघ्नता से सेशन को कंप्लीट होने दीजिए, आप ही करा के लीजिए, तो फिर नहीं होता। हाँ मैंने देखा ठीक है। है। देखिए मुझे लग रहा नेक्स्ट था बार। दीदी कि कोई ना नेगेटिविटी ऐसी है, क्योंकि मेरे से मैं मोस्टली अवॉइड हो जाती है मुझसे सुबीटिंग। हो तो सकता है। करनी करती हूँ तो फिर ये होती है दिक्कत। आज मुझे लग रहा था आज नहीं होगी क्योंकि काफी टाइम निकल गया था, लेकिन फिर हो गई स्टार्ट। हम्म। उसमें आकाश की वाइब्रेशन देते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, वो सब कुछ नहीं होगा वहां। सुबीटिंग स्टार्ट होगी, उसमें होना ही होना है इसमें। और हर सैटरडे कभी भी नोटिस करती हूँ, ये होता जरूर है। बट एक्सेप्शन है, ठीक है, आपने डेटा प्लान में बताया नहीं वैसे ही होता। करूंगी मैं। भैया मुझे तो डिस्टर्ब हो गया ना, मेरी तो बीच में रुक नहीं, गई ना सुबीटिंग। हाँ, आप आप बाद में यूट्यूब सेशन में कीजिए दीदी, यूट्यूब में आपको रिकॉर्डिंग मिलता है तो बाद में कीजिए, आपको शुभिट करना है, मुझे करूंगी, ऐसे कीजिए, अच्छा अच्छा, देखेंगे हाँ क्या है। हाँ, उसको नेगेटिविटी को बोलना है कि मैं रुकूंगी नहीं, मैं करूंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक तो है, जय करके श्री देखिए। माता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। भैया मैं आई Purki लीव। buniya na या akudu श्योर श्योर। हाँ, तिम्मापू ई पुजारी bunya भैया बोलिए। purn हाँ बोलिए, जय श्री माता भैया बोलिए, प्लीज टेल। नॉट एबल टू हियर यू। आपकी आवाज नहीं आ रहा है। आर यू स्पीकिंग? तिमप्पा no पुजारी brother, भैया। no brother, no brother, that's by mistakenly it is in just activated. ओके, वेयर आर यू फ्रॉम Sorry. भैया? Mangalore. मैंगलोर। मैंगलोर, मैंगलोर, वेरी गुड, Yes brother. वेरी नाइस। ಏರ್ ಸೆಂಟರ್ Mangalore. ಪೋಂದಲ್ಲರಿಗಿತ್ತೆ. ಫೋನದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮುರಾಟಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂದು ತತ್ತನ್ನು ಕೆಲಸ ತತ್ತನ್ನು ನಡುದು ఓకే సెంటర్ పోడు సెంటర్ పోంది ఇప్పుడు. ಸೆಂಟರ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆ ಹ್ಮ್. ಕೆಲಸತ್ತಿ ಅದೇ ತಿಮ್ ಕೂಲು ಕೆಲಸತ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತಿರ್ತೆ ಅದಾಗ ಪೋರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ This Timappa Pujari Bhaiya ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ got his realization in online, and he continued 1 year through online only, and then he connected to Mangalore Center. Oh, wow. Yeah, I think Kerala, Karnataka, it happens that way. I think there's one Didi called Sunita Didi from Bijapur. She also Yes, took yes, realization online only. yes. Lot of success in online, I Because think, in Karnataka. because of this Corona ಬಟ್ time, ವಿರಾಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ Yeah, yeah. All he Mother's grace. attended 1 or 2 realization program also with us, Timappa Pujari Bhaiya. Nice, nice. So, ಜಿ ಬ್ರದರ್ Bhaiya, I may ask you, what ಎಸ್ brought you to ಬ್ರದರ್ Sahaja? That is a big story actually. So wherever I go, everyone has the gurus. You know that. I was just Yes. praying gods. I was praying specifically for Sai Baba. Okay.
Shirdi Sai Baba that I want a guru, but I don't want Okay. this human guru. Okay. Right. So I was asking for, so after several years, one of the Sahaja Yogi has called me. He was my friend, and he was doing Ah, Sahaja Yoga since the last 1 year back. Actually, he didn't tell me okay. anything. So one day he said, "Do you want to come for the meditation? I'm doing meditation." So I said, Okay. I would like to come." Then he said, "Okay, come." Then 1 week passed. He didn't respond. Again, I called him. Then, "Can I come? When should I come?" Then he one Saturday he took me to the center. Then yes, then they gave the realization. But that time I didn't get anything. But I was worried about what these people are doing behind me. That lifting the uh, Kundalini. So I was not aware of all those things, right? So that time I didn't realize anything actually. So by this way I came to this thing. So that was a big my dream had came true. Like that after that when I got Sri Mataji's, then I realized, oh great! Since birth I wanted this actually. So one more thing was there that that in the childhood we are praying so many gods in the house. That there are several photos are there, right? Yeah. So what I was asking, why all these photos? In one photo only, I want all those things. I was looking at Sri Devi's photo, that Raja Rajeshwari Devi, and I was thinking that all the gods should be in this only, so that I can pray only because the agarbatti we have to do at home by Ah, right. parents' force. So we had to do agarbatti everywhere. I was thinking only one photo I want to do. So that dream also come true actually in this actually after so many years. So that's how it is. Very good. But you got your guru, I got my guru, no? That is Mataji. That's but she's what not there this is. physically, no. Pardon? So she's not there physically, but how did you? Can you explain more? How did you get your guru? No, I don't want a practice physically or something. I Okay. wanted a guru, not a human Okay. guru. Okay. I was asking for. So the same thing I Okay. got, right? So I got it now. So that's how. Very good. Very nice. Whether Very nice. she isn't physically also she is there if we feel, but she is Nirakar now. Okay. 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 Very good. Did that Yeah. answer your question? Yes. Yes. Very much. That seeking is there. Very strong. Very nice. Thank This boy attends all sessions of Virata. Acha. Then you have Almost. to give feedback. Sometimes, You have to give feedback saying this one is working very well. You have to continue with this one more. This one you have yeah, to do of like this. course. You have to tell. Of course. Many are there. Pardon? Hey, Gigi, panle, panle. Uh, Earlier, I never used to know that how we should uh, go into the beyond the Sahasrara and all. That I was not aware of that, how to go. I was just meditating. But in Virata, we came to know that what is Ardha Bindu, what is Bindu, how to go beyond Sahasrara, how to keep our chitta over there, those things, and how to connect from the beyond Sahasrara to all the chakras, how to cleanse them. All those things I came to later actually, not initially. And even putting the bandhan also, we do those errors, that while putting the bandhan, we just lift within a few seconds, we just finish up that bandhan. Okay, that is wrong actually. But we came to learn from Virata that through Virata in different ways, various ways, various sources of people here, Sajogis, that we have to put the correct way of bandhan, that how to lift the Kundalini properly and how to put the kavach and the meaning of kavach also. Each and every kavach from Muladhara to Sahasrara, that Devi kavach is covered in that, right? Completely. That earlier we didn't know that. We were not giving any importance to that. Much press we are not giving. Much importance we are not giving actually. Now we knew that. Now we know the real benefit of that and the real the importance of that, because Devi Kavach is huge, right? So all those Devi Kavach is covered in just lifting 7 times
left and right, right and left. You know that? That is how. That's what my understanding is. Oh, beautiful, beautiful, very nice. कृष्ण भैया माता जी भैया बहुत सारे लोग ऑनलाइन व्हाट्सएप वीडियो कॉल में रिलेशन लेके विराट सेशन को अटेंड करके थ्रू आउट द डे अभी उन लोगों का सहस्त्रार ओपन है। वाह, बहुत सारे लोग हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को होता है बताया। आपको इवन बताना है, आपको बताना है सेशंस में आप मैंने अटेंड करते एक हो तो आपका, तो कोई Correct. नहीं बता रहे हूँ तो ओके साइलेंटली दे आर फॉलोइंग एक एंड एंजॉयिंग। एक Yeah, यही I would like to question. tell you This one. was the question I was going to ask him up, Bhaiya, how it is impacting our Mangalore. You are enjoying this Virat. You are enjoying vertical growth. How it is affecting No, horizontally? I'll tell you. Yeah, actually, I came from Dubai here. I was in Dubai. I came to Okay, here okay. for two purposes. Actually, I left my job there because my son was in 9th standard. I wanted to be with them for 9th, 10th, 11th, 12th, and all. So I just Okay. not thought of earning money and all. I just came down. That is one of the purpose. And secondly, I thought I want to spread Sahaja in Mangalore. But I was not prepared myself. You know that my inner growth was not there. So inner growth, there was no, you know, that the knowledge is, what should I say? I don't understand that I was not improved. I was not improved to the extent which I require. Then the purpose of spreading Sahajog in Surat and Mangalore is not fulfilled actually. So even now also I'm getting so many challenges here because in Mangalore, in this area, Suratkal, we have all the population, almost all the populations are following this Bhuta, you know that Bhuta, Deva and all. Yes, yes, They yes. are also Shaktis actually, Shiva Shaktis, Parvati Shaktis, they are believing that. And of course, Right. it works very good because in our house also we have that. So I am facing the challenges even from home front as well and the society as well here. So for that, I was just thinking, let me go beyond let me open up Sahasrara to the extent possible to maximum. Then I'll think of this. That's what I was thought of that. Good, good. And you Because do cloud in vibrations? Suratkal, Yeah. pardon? You do cloud vibrations? Yes, I do, but Vibrating the cloud. Yeah, sometimes I that miss helps. that because of. Yeah, vibrating the clouds help a lot in the local area. Okay, I do that. Specifically, I request that at least Suratkali, even when we ask for spread this across the globe and spread this across this Suratkali area, particularly and in Dakshina Kannada and all, I was pray during that time. Beautiful, beautiful. Very It may nice. take time because whoever I given some people here the try to give the realization, but they are into the Sanatana, you know that they just go so deep into that, they don't come out from that. So Yes. much adamant on that. So I Right. just given up them. I think, so we can take a group, like say school students, college students, or job Mm-hmm. stress management. Use the topic like stress management. That is common, Okay. and people Mm-hmm. suffer mainly because of Okay. stress. So use stress. Nowadays you can tell Right. we get 60,000 thoughts, and most of the problems are because of this Mm. thought. No one is able to, and with mobile it has got more worse. With social media it has got more worse. But we found one nice technique that we learned to get into meditation. Meditation is a state of thoughtless awareness, meaning cutting down the thoughts. You tell them like that, and then slowly, okay, now to get into, can you imagine that you can be completely thoughtless for 1 second? You ask, Okay. and then they'll introspect. Is it possible? Right. Yeah, then you tell them it is possible. I'm meeting daily someone or the other who is experiencing this. Mm-hmm. We'll try. Then tell them, yeah, try. Don't worry about other things. Just worry about stress management. Stress management is a very good way. 90% population, we can give realization with stress management only, because people are suffering with so many things. I mean, thoughts. Everything, every thought is creating lot of problem. Yes. Right.
And still in Mangalore also, see what Didi in that Reliance, you know that we are Mall, given this thing, mall, yeah, Reliance Mall. Yeah. Didi, Padma Didi. They are Yeah, not yeah, I calling know. now. Later on, they I didn't think call actually. You know that they stopped. It means they were not so much interesting to see, because so. Yeah. even after pushing them What? towards Yeah, the yeah. What is important though? Yeah. What is very important is Mm, we have to let them experience that 1 second of silence, because that okay, silence will really, that experience matters a lot. If they have experienced that silence, you raise the kundalini or you help them raise the kundalini, then let them experience that silence. okay. Once that silence is there, okay. Yeah, yeah. So, Do you see? Can you put your right hand or you can ask, put your right hand 2-3 inches above the head, and then you ask them, can you observe if you're getting thoughts from the past or future? At least when you right, ask that question, they'll start observing. First time they'll start observing. They never observed. For the first time, they'll start observing. And when they observe, they become the spirit. right. Yeah. They And become when they become the silent spirit, and they'll see that, Arey, no, I'm not getting any thoughts. They'll tell. Then you bring the right hand down, left hand above the head, right hand towards Mataji. Then again ask them. Now, again observe with your left hand up there. Again observe if you're getting thoughts from the past or the future. I think I'm getting thoughts, but I think they're present. Okay, okay, very good. You're observing now. Then you'll tell, yes, you're able to observe. Okay, then keep observing. Then you tell them this observer, as per quantum physics, is the it. They say it in spirituality. They call this as Atma, spirit. You are this person who is observing now, who is able to observe that you're thinking or not thinking. You tell them, and then okay, this is who I am. Okay, now just observe. Now have the thoughts reduced? You ask. Yes, thoughts are reduced. And are you feeling any hot air, cold air, cool air, which are called vibrations? Are you feeling? Yeah, something is happening in my right hand. Something is happening in the left hand. Yes, yes. Then you'll tell that. Have that conversation. Have that conversation about thoughtlessness, because this is okay, immense knowledge. Thoughtlessness is the gate for breaking all the barriers. correct. Stress management is the way to go. 90%. 90% is stress management. Because Yes, for everything else, there is something or the other. They will tell this problem, that problem, this reason, that reason. So can you right. silence this chatter? You get continuously. Are you aware of the chatter that goes on in your head? They'll tell yes. Then you tell them, see, this chatter is basically thoughts, which you can't control. You're Mm, talking to yourself continuously. Do you observe that? You ask. Yes, I do. Can you stop it? Then tell, what are you talking about? Then you explain. This is yeah, thoughtless awareness is something like that, like that. You have to shock them. You have to tell them that which they can't believe. You can be thoughtless. क्या कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? What are you talking about? They can't believe it that you can be thoughtless, and he can be thoughtless too. That is the greatness thing. Once you make them experience thoughtlessness, then you will tell, this is what it is. This is your mother Kundalini energy. This is your own energy that is helping you cross yeah. your Agnya chakra. Once you cross your Agnya Till then, chakra, we you're shouldn't talk thoughtless. about Kundalini and all. Yeah. Okay. It's up to you. You can tell it's an energy, mother energy. And in Sanskrit language, it's called Kundalini energy. English, we don't have this word. We don't have any word specifically in English, but it's Kundalini energy, mother energy, you can tell. And it resides in the bone that even when we burn the body, that bone doesn't burn. You can tell that one. That's called sacrum bone. Little theory, very little theory, more Yeah. experience. It should be 70% experience. Best is use hands if required. Use hands. Ask him to see. I'm putting even my hand on your head.
So like this. Are you able to feel anything? Oh, yeah, I'm feeling. Now put your own hand on top of the head and again observe you tell. Like that. They have to use hands. Like that. Okay. Use hands. Because on the hands only Sri Chakra, Lal Chakra is there. It will work. Okay. Mind In will the not work. hands The only mind Sri is Chakra and very bad. Lita Chakra. We cannot overcome, we cannot fight the mind of people. They are much knowledgeable than us. Yes. Yes. True that. But we can help them go spotless. The recently, I think around 3 weeks back, a month ago, one of the guys had given the realization here. Then I asked, he was a drug addict actually. Just now recently tried to given up actually. I asked him to ask the questions after realizations and all, no? So he used to feel that cool breeze on hands and in the first step only. Then I just asked him to ask because he should have the strong belief in that right now when he sit before the mother. So I asked him, just ask whether you are Ganapati, Shri Mataji, whether you are Ganapati. Just ask him, and what is the feeling you are getting? Just tell me. The same way I asked him several questions. Asked him. So every question he has got the answers to it. That. So even I asked Beautiful. him, just ask whether Timmappa Pujari is the right person or not. He's a bad boy. Is he a bad boy? Again and again asked him. So he got the cool breeze over there. We asked him whether he's a good boy. Then he has a good. He got the cool breeze on the hands. He said on both hands I got that. So like Very that, different question. Then he started believing in that. But still then no, actually. So this is what happened. beautiful. Very good. Very good. बहुत अच्छा. और बाकी सब लोग बताइए, आपके कोई क्वेश्चंस है या Yes, एक्सपीरियंस Mataji. शेयर करना है? Others also please unmute and speak up if you have a question or an experience to share. श्रीमती जी कैलाश भैया, सापले. हाँ जयेश माता जी. भैया मेरे आप उस दिन बोल रहे थे, यू आर टेलिंग समवन अबाउट वन ऑफ द भैया सेड ही कैन नॉट ओपन हिज fist after the lemon chili, and you Correct. said to check with folic acid, na? So Correct. see, I'm having maybe it's around 20 years I can say. It's night when I sleep, I cannot bend my fingers because it's Okay. painful, hard. So Okay. many years when you said to me that I was coming from the seafood soap on the way, I suddenly remembered my fingers. I'm not having that problem now. Otherwise, Beautiful. always I keep my hands covered all the night. I will put specially one shawl for my hands only. Now I don't have that problem. I just remembered. I thought I don't know when did it disappear. Maybe it's 6 months ago or something. Maybe the hands started get feeling vibrations. Like since I joined Virat, see my sasras are getting off. So that Beautiful. is gone now. That problem, Beautiful. most of the problems gone for me. But that was the thing I noticed that day. After that, I feel no, there is no pain in the morning, nothing, no problem for me. Jai Shri Mataji. Thank you जयेश so much. माता. वेरी नाइस. जयेश माता जी कोई और बताइए, आपका कोई एक्सपीरियंस है या क्वेश्चन है? जय श्री माता जी भैया। जयेश माता दीदी. भैया जैसे सुबह हमें गंगा स्नान कराया, हम पूरे दिन भी पूरा हम मतलब थोड़ा उसी पर रहते हैं, लेकिन काफी देर तक रहने के बाद जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो उस समय बिंदु पर नहीं रह पाता। मतलब अगर जो बात कर रहा है उसको हम कहाँ से सुने, मतलब हमें किसी की बात सुनने का मन ही नहीं करता। लेकिन अब घर की तो जो बातें हैं कोई एक दूसरे से ऐसे कहेगा ना, मतलब वो स्थिति आ जाती है। लेकिन वो फिर जो कुछ कह रहा है ना, फिर हमें यही नहीं पता चलता उसने क्या कहा। फिर वो थोड़ी देर बाद घर वाला कहता है कि मम्मी आपने सुना या नहीं सुना, मैंने तो ये कहा था। मतलब अधिकतर ठीक है. हम हाँ, ये वाली बात आ जाती है कभी कभी।
ठीक है, अभी आप बात कर रहे थे, ठीक है, अभी आप बात कर रहे थे, हाँ तो हाँ मेरा आज्ञा चक्र में प्रेशर आया, हाँ ठीक है, हाँ। और प्रेशर आया आया, देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा। आप बात अच्छा। ही कर रहे हो और आग्नेय चक्र में प्रेशर आ रहा है, देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता वो सहस्रार के ऊपर चला गया। हाँ हाँ। फिर सहस्रार में आनंद आ रहा है, मैं सहस्रार का आनंद ले रहा हूँ। हम्म। तो समाधि ने क्या बोला, प्रेशर आएगा, एक चक्र पे प्रेशर आएगा, आप देखते रहो बस, हाँ आहिस्ता आहिस्ता फिर से ऊपर चले जाओगे। अगर ऊपर नहीं जा रहे तो हाथ इस्तेमाल करें, ठीक हाँ, है, थोड़ी वही देर दो करते मिनट हैं हाथ बार इस्तेमाल बार करें, हाथ से ही। या हाथ इस्तेमाल करें बस वो, मगर देखना आना चाहिए। तो अच्छा देखना अच्छा। प्रैक्टिस करना वो चाहिए, वही तो साक्षी प्रैक्टिस भाव में करते हैं। देखना कहते हैं। राइट, वही तो प्रैक्टिस करते हैं, पूरा दिन हम प्रैक्टिस वही करते हैं हाँ यहाँ हाँ। विराट में, वो प्रैक्टिस हो थैंक जानी यू चाहिए। भैया, जय श्री माता जी। रेशमा दीदी। If Yeshi Mataji, if no one is there, I need to share something. अगर कोई नहीं बोलना है तो बोलिए दीदी। भैया, जयश्री माता जी भैया, एक भरोसे की बात बोलती हूँ, विश्वास की बात है हमारी माँ पर। उस दिन मेरा हस्बैंड बीमार था ना, रात को जैसा पेन, उनको स्पॉन्डिलाइटिस का पेन था, तो हम लोग वही एस्यूम करके वही पेन करके रात को मैं इतना ही बोलती रही, 11 बज गए थे, हम लोग कहीं नहीं जा पाए रात को। तो मैंने यही बोली, जैसा कुछ हस्बैंड को काढ़ा वगैरह दिया, ये वो करते करते मैं यही बोल बोल के निकल रही वहां से। मेरी श्री माता जी है, वो हमें कभी नहीं रुलाएगी, वो कभी मुझे तकलीफ में नहीं डालेगी, श्री माता जी हमें मुझे नहीं रुलाएगी। यही बात मैं रात भर बोलती रही, और उनको कुछ काढ़ा वगैरह दिया एंड ही स्लेप्ट। मॉर्निंग में 5:15 को उनका स्ट्रोक आया था, अपने को मालूम नहीं था। तो तब भी मैंने यही बोलती रही, श्री माता जी मुझे नहीं रुलाएगी, कभी नहीं रुलाएगी, मेरे साथ श्री माता जी है, हमारे साथ श्री माता जी है, वो कभी नहीं रुलाएगी मुझे, मैं यही लाइन बोलती गई। उनका ये ड्रैग हुआ, वो अपना ऑर्थोपेडिस्ट के पास गए, वो रेगुलर संडे को होने होने वाले मंडे को गए, स्ट्रोक आने के बाद चले गए। सो वो ही वॉज वेरी नॉर्मल, अपने को मालूम ही नहीं था, एंड ही वेंट टू द हॉस्पिटल, 2 घंटा दूर में चले गए। इतना दूर रास्ते पे, वहां से डॉक्टर डाउट आया, उसने ये ईसीजी निकाला, तो ही सेड इमीडिएट इमरजेंसी, अभी का अभी एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटलाइज करना है। मैं थी दूसरे जगह में, वो है। तो एनीवे मैं इतना ही बोली, श्री माता जी आप हैं मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एंड वी अरेंज हिम टू ब्रिंग बैक टू आवर प्लेस, वहां से हॉस्पिटल लेके गए। और वहां गए तो इमरजेंसी में वो लोग ने बोला ना, इट शुड बी शिफ्टेड टू अनदर मेन हॉस्पिटल। ऐसा विद इन ए सेकेंड होता गया होता गया होता गया, एम्बुलेंस में बैठे 15 मिनट में डॉक्टर बोल हम पहुंच गए क्या। आई वॉज टेलिंग इन बिटवीन इन द एम्बुलेंस, आई वॉज सिटिंग विद माई हस्बैंड, मैंने कराचरण करता हुआ प्रेयर करते, मैं हार्ट में बंधन देते गए मेरे हार्ट में। तो मेरा हस्बैंड तक पहुंच के वो रोने लगा, तो डॉक्टरों को डर लगा क्या हुआ। तो मैं बोला कुछ नहीं, फिर हस्बैंड के हार्ट को ही हाथ रख के मैंने प्रेयर बोला, ही काम डाउन, एंड विद इन 15 मिनट्स हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। मुझे पता ही नहीं चला था मेरे हस्बैंड को हुआ क्या था। एंड वो क्लॉट कल के बाद उनको वार्ड में डाला, इसी में इमरजेंसी में सब कुछ होता गया। बाद में मेरे को 3 दिन बाद पता चल रहा है ही वॉज हैविंग 100% क्लॉट, एंड इट ही वॉज क्रिटिकल स्टेट। डॉक्टर वर सेइंग इट्स डिफिकल्ट, लेकिन हमें नहीं पता था, हम रोए भी नहीं, कुछ भी नहीं है। यही मैं बोलती रही, श्री माता जी मुझे रोनी नहीं देगी भैया, यही तो बात है। मैं भरोसा करती, और उसके बाद क्या हुआ, मेरा जैसा रात को नींद नहीं था, हॉस्पिटल में स्टे नहीं, हम लोग को डिस्टर्ब थे, मेरा बीपी बढ़ गया। तो बीबी बढ़ते मैंने माँ को ये बोला, माँ मैं अभी बीमार पड़ने का अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, जब तक मुझे पता है मैं फुट सोक वगैरह करके आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। श्री माता जी मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए प्लीज माँ, मुझे संभालिए थोड़ी दिन तक, मुझे इतने दिन के मोहलत दीजिए, बाद में मैं संभालूंगी, श्री माता जी मेरे साथ रहिए। भैया दैट इज द, ये प्रेयर, मेरा ये विश्वास है, श्री माता जी ने मेरे परिवार का मेरा पूरा ख्याल रखा। See now my BP is balanced. I'm going for walking and everything I'm taking, because my BP only goes up if I'm not sleepy and under stress. Otherwise, it is normal. So for this reason, I don't want to go to the doctor, because I don't want to take medicine when I'm not having BP. It is a chemical, only stays this much hours in my blood and it controls. मुझे वो दवाई नहीं लेना है। बट इस अच्छा ऐसे सिचुएशन में मुझे ये हुआ था, सो यही बोल रहा ना, मैं ये उसके बाद में बोल रही हूँ,
मैंने देखो ये बात बोला, श्री माता जी मुझे रोने नहीं देगी, सो आई डिड नॉट क्राई। सो सभी लोग बोलते थे बातें कितनी स्ट्रांग है, देखो बिल्कुल घबराई नहीं है, क्योंकि ये श्री माता जी का, मेरे को उनका एक रक्षा कवच थी, मुझे मेरे परिवार वालों को। तो मैं यही सभी को कहती हूँ, वो जो हम बोलते हैं ना श्री माता जी हमेशा। और एक बात है, मुझे मेरे ट्रीटमेंट के बाद मुझे पाँव नमनेस है तो स्लिप होता है, मुझे खाली पाँव चलने को नहीं होता, बट आई मेड माई सेल्फ दैट हैबिट, मेरे को धरती टच करना है। मैं चप्पल घर का अंदर, वो घर का स्लीपर नहीं पहनना बंद के 1 साल ज्यादा हो गया। जब फुटसो का पानी उठाती हो तो जो मुझे डर लगता था पहले, स्लिप हो जाऊंगी, गिर जाऊंगी, तो मैं यही बोलती रही, मैं फुटसो करे मेरा अपना क्लियरेंस के लिए, श्री माता जी मुझे कभी भी गिरने नहीं देगी, फुटसो का पानी उठाते वक्त मैं बिना चप्पल की उठाऊंगी। सो आई एम डूइंग इट नाउ, अभी मेरा हाथ में पाँव में ग्रिप्स आ गए बाद, आई एम नॉट स्लिपिंग लाइक दैट। सो ये मेरा श्री माता जी से कहो, हो जाता है, मेरा यही है। आप मानो तो भगवान है, जो अपना विश्वास है श्री माता जी के ऊपर दिखाओ, वो करके दिखाती है। जय श्री माता जी। ब्यूटीफुल दीदी, वेरी नाइस। जय जय श्री श्री माता जी माता जी। भैया। जयष्मा दीदी। जय श्री माता जी भैया। जयष्मा दीदी। अब भैया मैं ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जरूर। बात है जब मेरी शादी से पहले की बात है भैया, उस टाइम पे मैं वर्किंग थी। ये तो अचानक से भैया मैं ना डिप्रेशन में चली गई। उस सहज करती थी पर ज्यादा डीप नहीं थी, लेकिन मैंने मतलब रियलाइजेशन हो चुका था मुझे माँ का। तो मैं ना भैया डिप्रेशन में जाने के बाद मतलब इस कंडीशन में आ गई थी कि ना मैं सो पाती थी रात को, और बड़े बुरे बुरे से ख्याल आते थे। जैसे मोस्टली होता है ना कि सुसाइड कर लेती हूँ, ये तो बहुत आता था भैया मुझे। और 8 महीने 9 महीने लग गए थे भैया मुझे मैंने निकलने में। सुना डिप्रेशन में जब वो सुसाइड का थॉट्स आते हैं वो टाइम भी आता है, ये टाइम पे ये ये लिखूंगा ये करूंगा करके। तो भैया मैंने ना डायरी लिखना शुरू कर दिया पहले तो। अपना ओके। मतलब अपने क्वेश्चंस खुद ही मैं डायरी में लिखती थी, खुद ही उसका रिप्लाई देती थी। और चिड़चिड़ापन, कोई अकेलेपन से बहुत डर लगता था मुझे। मुझे ये लगता था कि मैं ना बस लोगों के बीच में घिरी रहूं, मेरे आस पास कोई रहे। और जैसे मैं ऑफिस में, मेरा सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी, तो मैं मेरी हार्ट बीट इतना तेज हो जाती थी भैया, मैं बता नहीं सकती। मुझे लगता था कि मैं घर में क्यों हूँ, मुझे लोगों के पास उनके साथ रहना है। तो भैया सोते वक्त ना जैसे अंधेरा होता था तो मुझे लगता था मेरा सीना अभी फट फट जाएगा। मैं कितने महीनों से भैया सो नहीं पा रही थी, सो नहीं पाई थी। तो मैं रोती थी, मैं माँ से बहुत प्रेयर करती थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही माँ से बोला कि माँ बस आप ही मुझे बचा सकती हो। तो उस दिन भैया मैंने 3 महीने 4 महीने हो गए थे, श्री माता जी को अपने हृदय में भैया मैंने महसूस किया। और मैं ऐसा सोई हूँ भैया, माँ ने, मुझे ऐसा लगा कि माँ ही मेरे हृदय में आके बैठ गई हैं। और मैं सुबह भैया मॉर्निंग में ऐसा उठी हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें बंद हुई हैं, कब मैं उठी। और सुबह उठ के मुझे ऐसा लगा कि मैं कितने सालों में, मतलब 100 साल बाद आज इतनी अच्छी नींद मैंने निकाली है। मैं मतलब बता नहीं सकती भैया। और उन जो फोटो मैंने भैया माँ का अपने हृदय में महसूस किया, वो वही फोटो था जो शायद एक हम लोगों ने एक बार जूम मीटिंग में कपूर अंकल जी का उन्होंने शेयर किया था फोटो। उनको राइट भी राइट कुछ राइट, ऐसे श्री ही कृष्ण प्रॉब्लम गीता, था। या। यस भैया वही फोटो मैंने श्री माता, जब मैंने देखा तो वो वही फोटो था माँ का जो मैंने अपने हृदय में महसूस किया भैया। वाह तो वाह। मतलब कहीं ना कहीं श्री माता जी भैया, और उन्होंने मुझे मेरी इतनी हेल्प की। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नोएडा में, दिल्ली में इसका सेंटर है हमारा सहज का, उसमें डॉक्टर साहब भी बैठते थे उस टाइम पे सहज के। तो उन्होंने कुछ मुझे मतलब ट्रीटमेंट वगैरह बताया, वो मैंने किया। उसके बाद तो भैया मैं रेगुलर मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन मतलब ये कि 8 9 महीने में मैं पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर आ गई। बस ये था कि बस माँ के ऊपर मुझे पूरा भरोसा था। मैंने अपने आप को उस टाइम पे बहुत संभाला, और शेयरिंग, मेन चीज़ है शेयरिंग किया, अपने अंदर वो चीज रखी नहीं। जैसे होता है ना डिप्रेशन में कि आप एक बार शेयर करोगे तो उस टाइम आपको अच्छा बिल्कुल। फील लगेगा अपने फ्रेंड के राइट। साथ। देन आफ्टर 1 आवर 2 आवर आप दोबारा से, फिर वही आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी, और आप फिर से सुसाइड करने का मन करेगा। तो भैया वो जो मेरे टाइम पीरियड था ना भैया, बहुत ही टफ रहा मेरे लिए। लेकिन बस माँ की कृपा से आज धीरे 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 फिर मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता रहा। फिर बीच में ऐसा दौर आया कि फिर ये सब कुछ मेरा धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन विराट में आने के बाद तो भैया मैं बता नहीं सकती हूँ। अब तो मेरे हस्बैंड भी करते तो नहीं है वो, लेकिन बेटी को चाहते हैं कि वो करे। और अब तो वो भी भैया सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री माता जी बोलते हैं मेरे को।
तो वो इतना वो हो गए हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, वो अभी दूसरी जगह मतलब पोस्टेड हैं, तो वो टेलीफोन में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो बेटी अब बोलती है मेरी कि पापा आप भी ना सहज किया करो। तो उन्होंने बोला कि हाँ अब आप कर रहे हो ना तो मैं भी करूंगा, जबकि वो गए हैं, वो मानते हैं पर करते नहीं है, खाली मतलब दिया वगैरह जला देते हैं, करते नहीं है। और मुझे भी मना नहीं करते हैं, ना बेटी को मना करते हैं। ब्यूटीफुल, तो बहुत इतना अच्छा। मतलब विराट का असर तो पड़ा है, वो चीजें वो भी देख रहे हैं, क्योंकि मैं इतने सालों से मैं कभी भैया मॉर्निंग में उठ नहीं पाती थी, इतने साल हो गए हैं, बिफोर मैरिज भी आफ्टर मैरिज वो मुझे बेड टी ला के देते थे। पर आज ये कंडीशन है कि वो कहते हैं क्या सुबह सुबह उठ के नींद डिस्टर्ब करती हूँ मेरी। अंदर से खुशी है उनको कि यस, मतलब इसने जब से विराट ज्वाइन किया है तो कुछ तो चेंजेस हैं। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। हाँ भैया, जय श्री माता जी भैया। जयश्मा, थैंक यू। जय श्री माता जी भैया। जयश्मा दीदी। भैया मेरा ना लिप स्वादिष्टान का उंगली और विशुद्धि का उंगली, उसमें ना थोड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, 3 कैंडल कब किया आपने? 2 दिन पहले। अभी करिए, 3 कैंडल करिए, हम्म 3 कैंडल करिए जब तक वो लेफ्ट उंगली में ठंडक आई है ना, हम्म लेफ्ट स्वादिष्टान में और लेफ्ट विशुद्धि में करिए। हम्म उसके बाद जब ठंडा आ गया फिर बंद करिए और फिर 3 फुट कर लीजिए। ओके। जयश्मा। जय श्री माता जी। Jai Mataji, I think the transformation within the family is very slow process, I think, right? Everyone is experiencing, even myself as well. So in my family also, there's very slow Yeah, process of yeah, transformation. once Shrimata ji is shining through your words and your actions, the Yeah. transformation is very fast. True, that is. Yeah, once Shrimata ji has to shine Yeah. through our words and actions. Once she starts shining Okay. in the house through our words and actions, then it becomes simple. Okay, Sheena Didi, is it you today? जय श्री माता जी, Yes. यस भैया, मी। Okay, okay, okay. Okay.